Good morning. Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty. Welcome you all. So the subject is research methodology, and the topic for today is research design. So let's start. So first, these are the references. These are the books from where the PPT content has been made. So first one is Business Research Method by Cooper and Schindler. Second is Business Research Method by Zygmunt, Bevin, Kerr, and Griffith. And third one is Marketing Research and Applied Approach by Malhotra and Burks. So these are the three books. You can read these three books, and in order to get more information on these topics. So let's start. The topic is research design. So इससे पहले lectures में you have done hypothesis formulation, variables, types of variable, research process. So now उसी के continuation में हम discuss करेंगे research design. So first research design की definition. So research design, what is research design? Research design is a framework or blueprint for conducting a research process. So जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो पूरी रिसर्च आप कैरी आउट करेंगे, उसके लिए जो फ्रेमवर्क होता है और जो ब्लूप्रिंट होता है, उसको हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन. सो रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट. It details the procedure necessary for obtaining the information needed through structure or solve research problems. So पूरा जो प्रोसीजर है आपका, जो जो स्टेप्स आप लेंगे, कैसे आप किस तरह का रिसर्च डिजाइन आप यूज करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस, सो जो पूरे प्रोसीजर्स हैं जो नेसेसरी हैं फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन नीडेड. सो कंप्लीट जो आपके स्टेप्स हैं, वो पूरा जो फ्रेमवर्क होता है, उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन. सो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन की बात करें, तो जनरली दो रिसर्च डिजाइन में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी एंड सेकंड इज कंक्लूसिव. So as the name suggests, exploratory first हम discuss करते हैं. So you are exploring something. So exploratory is to obtain some background information where absolutely nothing is known about the problem area. So किसी प्रॉब्लम पे आप कर रहे हैं, कोई आपका let's suppose you have taken any problem और उसके लिए आपको ज्यादा लिटरेचर नहीं है आपके पास, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है. So that is completely new. So when you are determining information about a topic or a problem where you are not able to find sufficient literature, so you use exploratory research design to define problem areas fully and to formulate hypothesis. So यहाँ पर आपके पास since you do not have literature, तो आपके पास hypothesis built नहीं होती है, पहले से hypothesis नहीं होगी. So you will formulate hypothesis. So exploratory research design तब यूज होता है when you are formulating hypothesis for further investigation, when you want to have some background information where absolutely nothing is known. Concept identification, आपके पास जैसे concept हमने पढ़ा abstract जो फॉर्म में होता है, तो that is concept. जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, दैट इज योर कॉन्सेप्ट. जो आप स्टडी में कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, उसका आप यू हैव नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, और आप एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं. सो देन यू विल यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन हो या एक्सप्लोरेशन हो, सो यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस बनाते हैं, बट यू डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट, तो आप एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप जब करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे, देन यू वुड यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, जैसे यू कैन सी टू एक्सप्लोर इश्यूज दैट रेस्पोंडेंट्स मे होल्ड डीपली, दैट आर डिफिकल्ट फॉर देम टू रैशनलाइज, दैट मे बी डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, to explore the reasons that lie behind statistical difference between groups that may emerge from secondary data. So अगर आपको किसी दो ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस दिख रहा है, तो उसका रीजंस क्या हो सकते हैं. So these are the following reasons where you would use exploratory research design. Basic क्या होता है, जब आप फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, यू डू नॉट हैव हाइपोथेसिस, आप कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक पे वेयर एब्सोल्युटली नथिंग इज नोन, आप किसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. सो इन दीज सर्कमस्टांसेस, जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है, देन यू वुड यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन. सेकेंड हम करते हैं डिवाइड जो होता है रिसर्च डिजाइन, दैट इज कॉल्ड कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन. सो कंक्लूसिव में अपार्ट, अब एक्सप्लोरेटरी आपने करा समथिंग न्यू वेयर लिटरेचर इज नॉट नोन टू यू. कंक्लूसिव में यू हैव द लिटरेचर, यू हैव द हाइपोथेसिस, उसको आप टेस्ट करते हैं. कंज्यूमर्स के बिहेवियर को बताना, तो जैसे
आपके पास जब ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिवेंट ग्रुप सच एज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट एरियाज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना, टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, कितनी बार वो इवेंट अकर हुआ है, ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टिमेट द परसेंटेज इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन when you want to determine a percentage, to measure marketing phenomena to represent larger population, to determine the perception of product or service characteristics, to make specific prediction, आप कोई predict करना चाह रहे हैं कि if you change one variable what will be the effect of that change on other variable, तो ऐसी कोई prediction आप कर रहे हैं. So in such circumstances you would use conclusive research design. सो दो रिसर्च डिजाइन है, अगर हम इनमें डिफरेंशिएट करें तो एक्सप्लोरेटरी एंड कंक्लूसिव. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक्सप्लोरेटरी में यू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ मार्केट फिनोमेना. सो यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम. Here you have specific hypothesis and you test those hypotheses. To test specific hypothesis and to measure, and here to understand. Characteristics की बात करें, information needed may be loosely defined since you do not have sufficient literature. Here information needed is clearly defined. यहाँ पर sample small होता है, sample is large. Research process जो होता है that is unstructured or flexible, यहाँ पर बिल्कुल आपका जो research process होगा that would be structured. Data analysis can be qualitative and quantitative. Data analysis is quantitative. So these are the difference between exploratory and conclusive. So these were the two research design, conclusive and exploratory. Exploratory may generally be divided into two, that is qualitative and quantitative. So when you have qualitative data, then that is called qualitative exploration, and when you have quantitative data, that is called quantitative exploration. Conclusive में बात करें तो descriptive and causal. So first we will discuss descriptive research क्या होता है. So conclusive में descriptive. So descriptive, that is the major objective of descriptive research is to describe something, usually market characteristics. A major difference between exploratory and descriptive is that descriptive research is characterized by prior formulation of specific research question or hypothesis. Exploratory में जैसे आपको बताया, you do not have idea about the hypothesis. बट डिस्क्रिप्टिव में यू हैव प्रायर आपके पास पहले से लिटरेचर है, सो यू हैव प्रायर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर हाइपोथेसिस पहले से आपके पास होती है डिस्क्रिप्टिव में. एक्सप्लोरेटरी में कोई हाइपोथेसिस नहीं होती है, वहां पर आप फॉर्मुलेट करते हैं. सो एज अ रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होती है. सिंस यू हैव लिटरेचर, यू हैव हाइपोथेसिस. इट इज टिपिकली बेस्ड ऑन लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. जब आपका सैंपल जो होता है लार्ज होता है, देन यू यूज डिस्क्रिप्टिव. A descriptive research design specifies the method for selecting the sources of information and for collecting data from those sources. So you select the sources for information and then you collect the data. The sample is quite large and structured होती है, ये pre-planned होती है. यहाँ पर you have prior formulation of objectives, questions and hypotheses. Descriptive के examples की बात करें, जैसे हमने कहा descriptive is all about describing something, describing a phenomena. So जैसे market studies describing the size of the market, buying power of consumer, availability of distributor, consumer profile. So when you describe these phenomena, या size आप बता रहे हैं, buying power बता रहे हैं, तो that is an example of descriptive research. Descriptive studies. Market share studies determining the proportion of total sales received by a company and its competitors. जब आप sales बता रहे हैं company की, specific companies की, that is also an example of descriptive. Sales analysis studies describing sales by geographic region, north, east, west, आप पूरा जो regions के हिसाब से sales बता रहे हैं, that is you are describing. Image studies determining consumer perception of firm, that is also. So these are few examples of descriptive studies. So descriptive में you have cross sectional and longitudinal. Cross sectional, single or multiple. So first we will discuss cross sectional design. सो क्रॉस सेक्शनल इज जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं अपने सैंपल या पॉपुलेशन से ओनली वंस, एक ही बार जब आप डेटा करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन. सो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस. सो एक ही बार आप जाएंगे अपने पॉपुलेशन या अपने सैंपल के पास एंड यू कलेक्ट डेटा ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल. क्रॉस सेक्शनल दो में डिवाइड करते हैं हम, सिंगल क्रॉस सेक्शनल और मल्टीपल. Single में only one sample of respondent is drawn from the target population and the information is obtained from the sample only once. एक बार आप कलेक्ट करेंगे बट एक सैंपल से, आपने वन सैंपल एक सैंपल ड्रॉ करा है पॉपुलेशन से, उसी से आप ओनली वंस डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन. इसको हम कभी कभी सैंपल सर्वे रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं. मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में देयर आर 2 और मोर सैंपल. सो आप 2 या 2 से ज्यादा सैंपल लेते हैं बट द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन ओनली वंस.
क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल है. So information is obtained only once, but you can have 2 or more samples from the population. Often information from different sample is obtained at different times. So जरूरी नहीं है आपने 3 सैंपल लिए हैं तो you can obtain information, but only once, but at different times. उसके बाद हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल. जब आप डेटा ओनली वंस कलेक्ट करते हैं, सिंगल एक सैंपल, 2 और उससे ज्यादा सैंपल जब आप कलेक्ट करते हैं ओनली वंस, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल. डिस्क्रिप्टिव में सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल. सो लॉन्गिट्यूडनल जो डेफिनेशन है दैट इज अ फिक्स सैंपल और सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट इज मेजर्ड रिपीटेडली. सो आप जो सैंपल आपने सेलेक्ट करा है उसी से आप बार बार डेटा जब कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. A longitudinal design differs from cross-sectional in that the sample or samples remain the same over time. So you keep on collecting the data, but the sample remains the same. In other words, the sample people are studied over time. So let's suppose example hai, a longitudinal design would be used to address the question, how did the Indian people change their view of Prime Minister's performance during his tenure? So जो Prime Minister है उनके tenure में क्या लोगों का opinion change हुआ है? सो आपने लेट्स सपोज 2017 में पूछा, देन 18 में पूछा और 19 में पूछा, बट द सैंपल वाज, जो आपके सैंपल थे पीपल वो सेम थे. सो आपने रिपीटेडली उनसे पूछा. सो फिक्स सैंपल और सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट इज मेजर्ड रिपीटेडली. हाउएवर फॉर द क्वेश्चन, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडियन पीपल रेट द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. सो इसके लिए आप यूज करेंगे क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि आप एक ही बार डेटा कलेक्ट करेंगे. बट अगर इस क्वेश्चन में आप देखें, हाउ डिड द इंडियन पीपल चेंज देयर व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, सो पूरे टेन्योर में आप चेक करना चाहते हैं तो एयर वाइज आप डेटा कलेक्ट करेंगे. एंड जब व्हेन यू कलेक्ट एयर वाइज सेम पीपल ओवर टाइम, सो देन दैट इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन. So that is the difference between longitudinal and cross sectional. Cross sectional में आप only once करते हैं, it can be from one sample or 2 or more sample. Longitudinal में the sample remains the same, you collect it over time. Same people are studied over time. That is called longitudinal design. So these are some of the differentiation between cross sectional. So जब आप change detect करना चाहते हैं तो better है longitudinal use करें. When large amount of data आप collect करना चाहते हैं then longitudinal. Accuracy more is in longitudinal design. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपको चाहिए तो डेट इज क्रॉस सेक्शन में आपको ज्यादा बेटर है. एंड रिस्पॉन्स बायस आपने हटाना है तो क्रॉस सेक्शनल इज अ बेटर चॉइस. सो ये दिस वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो जब भी हम रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो वी शुड नो व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. सो अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम के बारे में, देन एक्सप्लोरेटरी. But you have sufficient literature and you have hypothesis and research questions, then you can use conclusive. Conclusive में भी आपको decide करना होता है whether you would use descriptive or causal. So when you are describing something, then you would use descriptive. Causal we will discuss in next section. Causal is all about cause and effect relationship. So जब आप cause and effect की बात करते हैं, then you would use causal research. Descriptive में you have to specify whether you have a cross-sectional design or longitudinal. Cross section, if you are using cross section, then mention single cross sectional and multiple cross section. So next class we will discuss causal research. So that is all for today. Thank you so much.